राइट ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ लास्ट टाइम हमने एंड किया था। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार देख लूँ सब सही है। या ठीक है भाई। तो लास्ट टाइम क्या होता कि यहाँ पे एक बिग बॉस था, हम वहाँ पे अटक रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी वहीं जाने वाले, मैंने कुछ अपग्रेडेशन वगैरह भी किए हैं। वही जो मतलब जो लास्ट वीडियो में ही थी, वही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया ना। मतलब कुछ स्पेल्स वगैरह के अपग्रेडेशन किए थे, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अभी तो वो छोटे छोटे एनिमीज रहेंगे, वो छोटे छोटे वो रोबोट टाइप वाले। ठीक है, और उसके बाद आएगा वो बड़ा एनिमी। एनिमी एनिमी अरे बहन, वाह, कितने बेकार टाइम पे फोन ड्रॉप हुआ है भाई। अब तो ये वाले तो कुछ नहीं लगते यार, पहले ये कितने वो थे। अब उस डायमेंशन वाले बच्चे हैं ना। डायमेंशन बोल दो, क्या बोल दो, मिरर वर्ल्ड बोल दो भाई, जो बोलना है तुम्हें बोल दो। ठीक है, अब आ गया, विजिबल होगा, विजिबल। ये इसके बाद जो बॉस आएगा ना भाई, वो है, ये तो चुटके पुटके रहेंगे। देखिए, इसकी तो मैंने अरे शॉट गिरा दी थी यार, तू फिर से ले आता है। व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस वेव है? हाँ, चलो, आई थिंक मेरे दो जो एंशिएंट मैजिक वाली पावर से दो तो हो गई हैं, 2 बार। तो मैं एक बार लगा दूं पहले। अच्छा खासा किया। Destroy the orb as it's charging, ये कैसे करेंगे भाई? उसकी बहन का मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा बहुत भागूंगा। इसकी बहन की यार, ये यही करना था ना, डिस्ट्रॉय द चार्जिंग। ये क्या था? भाई यार कैसे डिस्ट्रॉय करूं मैं उसको?
और वो कैसे डिस्ट्रॉय करूंगा यार मैं? जी भैंस की आँख। ओह नाइस नाइस। जो भी हुआ मुझे नहीं पता क्या हुआ। बच गया भाई। जो भी हुआ बस भाई। और इसी के साथ इजी था यार वो लास्ट स्ट्रीम में। क्या मैं थोड़ा थक गया था। अब 2-3 घंटे से खेलना मतलब रात के 11-12-1-2 बजे रहे थे। आंखें दर्द करने लग जाती हैं। और रिलीफ सही बोल रहा है। तो हम यहाँ वैसे नहीं मारने आए थे। और अब कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग चार्ल्स रुकवुड्स यार मस्त था, लेकिन उतना तगड़ा विलन भी नहीं था जितना मैंने टाइटल में लिखा है। बट ओके मतलब ठीक था। मुझे बस जैसे ही पता चला ना कि ग्लीशियर से उसका और वैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस टाइम पे भाई जो खुशी थी मतलब क्या ही बताऊं मैं। Still learning। चलो उससे पहले कि मैं गियर चेंज कर ले रहा हूँ। देखो कुछ चीज़ मिली है मैंने। ये वाली रोप मिली 57, इससे अच्छी यार है ना। फुल वाइट है क्या? अच्छा यही तो थी। अरे मस्त है यार ये। I mean it's very good। I'm still learning to love myself। Still learning to love myself। Love myself। दोनों ही एक जैसी है ना। ये ज़्यादा बैठ दो। डीमन स्लेयर वाली नहीं रखना हमें। हाँ एकदम मस्त है। अरे मैं ये बताऊँ अपन ये बॉन्ड अपनी कस्टमाइज कर पा रहे थे, किसी भी कलर वगैरह कर पा रहे थे, लेकिन मैंने वो जल्दी जल्दी में कुछ भी सिलेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं, मुझे अब ज़्यादा वो नहीं रहता कस्टमाइज इन चीज़ों का। चार्ल्स गुड मेमोरी। ओह स्टैचू है ये तो। मस्त स्टैचू यार। मुझे लगा ये बॉस मॉस फाइट है क्या मतलब। I am curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. जब भी हम कोई मेमोरी वगैरह देखते हैं ना। Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. अच्छा इसका भाई इज़ाडोरा। On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain.
अच्छा, नाइस। इसकी और अपनी बॉन्ड सेम सेम क्यों लग रही है? Isadora. फॉरबिडन मैजिक होगा और ये What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. पेंसिव आर्टिफैक्ट, ओके। ठीक है, मतलब जो भी ये फॉरबिडन मैजिक ही, इसको भी वही पावर है ना ये? क्या पता भाई, आधा अधूरा चीजें समझ में आई मुझे अभी तो। लेट्स सी, देखते हैं क्या जो भी होता है। I'm still learning. ठीक है भाई यार, ये लोड बहुत देर में होता है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। ओके, मैप चैम्बर में हम वापस आ गए। You're back. And in one piece, no less. पॉसिबल से बात करना। It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What did Isadora remove from her father's chest in the memory? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. अच्छा, धीरे-धीरे पता चलेगा। I'm ready for whatever comes next. Isadora In एक that हिसाब case, से introductions are in order. डार्क मैजिक वगैरह यूज करने लग Allow गई me थी। to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. अच्छा है, वो ठैड है, वो मैडम इन्हें वो साथ रहती थी। How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Okay. Professor Fig. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon.
ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपना ये वाला जो क्वेस्ट था वो हो चुका है। अब आई थिंक हमें थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह लेनी होगी, कुछ नए नए स्पेल्स वगैरह सीखने होंगे, और हमें वो गॉब्लिन से मिला रॉक। अभी कहाँ हॉगवर्ट्स, विंटर आ गई भाई। नाइस, एक सीज़न निकल गया, मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया। वाह यार, अब मतलब विंटर ही रहेंगे हॉगवर्ट्स में। वाह यार, नाइस। तो इसने मतलब अच्छा खासा टाइम उस लास्ट लास्ट टाइम जब इसने फिक्स से बात करी थी ना, तब के बाद अच्छा खासा टाइम इसने स्पेंड किया है हॉगवर्ट्स में। Revelio. ठीक है, आउल वगैरह नहीं है अपनी कुछ? थोड़ा भाई खाना वाना खा लूँ मैं। नाइस, क्या थोड़ी भूख लगती भाई। Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. ठीक है, स्पोर्टी से जाके मिलना अपने को। स्वीटी स्वीटी भाई, सबके इसमें जा सकते हैं, मुझे नहीं Revelio. पता। वैसे खाली ही होंगे वो। नाइस, बड़े दिनों बाद आए ना हम अपने हाउस के वो कॉमन रूम में। कॉमन रूम ही कहलाते हैं ना ये। कॉमन रूम नहीं, ये रूम से, और कॉमन रूम ये देखो, बताओ। I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. चलो, तो प्रोफेसर होइन करके कोई है जो अपने को एक नया स्पेल सिखा रही है, एक्सपोजिंग टास्क। कौन सा देख लूँ एक बार में, कौन सा था? क्वेस्ट ये रहा है अपने। हाँ, तो ये है इस पॉपी, नहीं, ये तो जो प्रोफेसर होइंग जो सिखा रही है बॉम्बार्डा करके, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए अभी हमको, तो ये सब तो नहीं कर रहा है। हम मेन मिशन करेंगे फायर एंड वाइस, तो इसके लिए हमें पॉपी से जाके मिलना है नॉर्थ ऑफ हॉगवर्ट्स में। ठीक है, मैप में दिखाना भाई कहाँ हो। ओके, ये सारे बहुत दूर मिला रहे यार ये तो। एक काम करूं मैं, लेट्स फास्ट ट्रेवल हियर। फास्ट ट्रेवल कर लेते हैं ना, टाइम बचता है उससे। थोड़ा सा बस लोडिंग ही होगी जब तक स्लिदरीन का लोगो देख लो तुम, और ग्रिफिंडोर का, रेवेनक्लॉ का। हफलफफ की कोई इज्जत नहीं, मतलब है उसका लोगो नहीं दिखाओगे तुम। दिखा दिया क्या? निकाल दी। I'm still learning to love myself. Still learning to love myself. न्यू पोशन, ठीक है, हो गया भाई। हाँ Travel broadens the mind. भाई, विंटर कितनी अच्छी लग रही है यार। सही है यार, आइडिया 2 वाली वाइब आ रही जब उसमें विंटर जाती है। पर उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया भाई ये विंटर लेके। चलो भाई अपना पंछी उड़ा देते हैं इनसे। अरे उड़ जा। Away, Highwing! Away! ओह नाइस, क्या तो चीज़ है भाई ये हाईविंग। अपना पर्सनल है एक हिसाब से, है ना। आ जाओ, बैग में घुस जाओ तुम। ये मशरूम ले लेता हूँ मैं। ये रही अपनी। Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. अरे एकदम बढ़िया हाईविंग, टेंशन मत ले। Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good.
Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poacher spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. ठीक है भाई. Your secret stays with me. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. After I think Highwing. she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? ठीक है. This way. तो कुछ पोचर्स वगैरह हैं जो कुछ एनिमल्स हैं जो मैजिकल एनिमल्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं. तो पॉपी अभी हम उनका ही वो करना है, थोड़ा उनका ठिकाने पे लाना है. पॉपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. A centaur. Tread अरे वाह, carefully. आधा घोड़ा आधा आदमी देख रहे हैं. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. ठीक है भाई. He was certainly a charmer. डरा के गया भाई That वो. could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Oi! That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It मैंने seems तो that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. डगबॉग तो भाई I've बहुत noticed that too. ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही It's बिहेव almost करते like देखा है there's मैंने. something in the water. इधर ही थे क्या वो पोचर्स? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. हेलमेट और शील्ड है तो. ओके, तो हमें यहाँ पे पता करना है भाई पोचर्स क्यों हैं. क्या कर रहे थे पोचर्स? Why wouldn't they take their cages with them when they left? Still smoking. They can't have been got pelts. Poor beasts. Revelio. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Revelio. कॉफी पी लूँ भाई मैं थोड़ी. हाँ. चलो भाई अब. वो गॉब्लिन के लिए यहाँ पढ़ते पोचर्स. Anything interesting? एक हिसाब से सब गॉब्लिन्स के लिए काम कर रहा है. सब कुछ Poachers were here. रैनरॉक और रुकवुड से जुड़ा है. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here.
मर्लिन यहाँ की गॉड है समझ I लो। don't have a good feeling about इसलिए वो this. बोलते कि मर्लिन ओनली नो मर्लिन्स बियर्ड वगैरह वगैरह काइंड ऑफ गॉड है। How do goblin and poacher interests align? मनी ब्रो मनी। Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see बहुत us. सारे लोग हैं यहाँ Should we पर। use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. चलो नीचे चलो, लेकिन आज छुप के जाना है भाई अपने को, ज्यादा वो नहीं। Revelio. मैं एक बार देख ले रहा हूँ कुछ दिक्कत तो नहीं है। डिसिल्यूजनमेंट यूज कर लूँगा एकदम जादू थोड़े। भाई इनविजिबिलिटी पोर्शन नहीं है क्या अपने पास? भाई यहीं कहीं बनाने का होता है यार, बताइए वो Where did I set my traps? Lower Hogsfield or Upper Hogsfield? एक काम करूंगा मैं यहाँ से लाऊंगा। Irondale's not half as और इनको एकदम क्या है, कौन सा आता है? पेट्रिफिकस टोटालिस है ना बेचारा वो कैसे गिरा है यार बेचारे यार, दया आ गई यार बेचारे। You only need to cast your ear to my voice, because I'll know exactly where I am. Come out before I find you. अबे रुक, Totalis. अबे तो बहुत ओवर पावर्ड है भाई ये। Revelio. डिसिल्यूजनमेंट और पेट्रिफिकस टोटालिस करके जो सा ये है ना, ये क्या नाम है बहन? Totalis. Revelio. Show yourself! बेचारे। Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find Revelio. out. नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो डिसिल्यूजनमेंट अलग करो। Revelio. सब कुछ मिल सकता है यहाँ से। I'm still learning to love myself। भाई यहाँ पर तो नहीं कुछ नहीं है, शायद स्टैंड के अंदर होगा है ना कुछ स्टैंड, इसके अंदर से कोई विलन ना निकल के आ जाए। What in Merlin's name? Are those dragons? और ड्रैगन फाइट, ये तो इल्लीगल होगी भाई। तभी ये ड्रैगन टाइप के गायब हो रहे थे, जो भी इनको कहते हैं, मतलब है तो ये ड्रैगन फैमिली का ही ना। अब हैरी पॉटर वर्ल्ड में जो भी नाम है इनका, विजार्डिंग वर्ल्ड में। It's a dragon fighting room. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most guys being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. चलो डिसिल्यूजनमेंट। That's a brilliant idea. Revelio. वो टेंट के अंदर देख रहे हैं एक दुनिया, एक हिसाब से उन्होंने पूरा स्टेडियम बना के। Don't know what Victor was thinking, striking a bargain. Totalis. Are you careful? ऐसा क्यों भाई?
कुछ कुछ चीजें अपन हटा ही देते। भाई इतने जल्दी क्यों फुल हो जाता है इन्वेंटरी? कुछ टैलेंट वैलेंट थोड़ा इन्वेंटरी कैसे फुल कर वो बढ़ाएं अपनी। नहीं इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कोई इन्वेंटरी वाला। हाँ मैं हो ही ना भाई का डार्क आर्ट्स पे थोड़ी होगा ये सब चीज़ें। सेंस ऑफ सीक्रेसी ठीक है। भाई हो गई यार आ गया है हेड था जाना है उस तरफ है लेकिन मैं पहले इस तरफ जाऊंगा एज ऑलवेज। भाई बहुत लैग मार रहा है भाई इस जगह पे तो। Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our next will be Totalis. What was that? बच गया भाई वो उसने पकड़ ही लिया था। अरे यार एक गैर स्लॉट की माँ का मैं पूरा बेच के आता हूँ फिर भी यार नहीं ये बिल्कुल नहीं भाई। लेजेंडरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल अपॉइंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम चीजें भाई हैं। अभी हम कहीं वापस भी नहीं जा हो गया जो भी होगा यहाँ पर रहने दो। बिगनर पोषण अच्छे दे देते हैं भाई ये लोग अच्छे लोग हैं। Stick to copy. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? इसको टॉर्चर कर रहे हैं वे। They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her, shall we? चलो इसकी चैन तोड़ देते आ जाओ। बेचारे ड्रैगन पे जुल्म कर रहे हो तुम शर्म नहीं आती बेजुबान। Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Revelio. Hello, Hamora. ड्रैगन एक्स से क्या एकदम अभी बच्चा निकल ही जाएगा क्या? अबे ऐसा थोड़ी होगा।
All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Scrapple you are. Don't think you'll get it out of here. Back to the dirt with you. मैं वैसे एक ही चीज से इनको मार पा रहा हूँ. अभी तो मैंने मेरी कुछ अच्छा स्पेल भी यूज नहीं किया. बेटा तेरे ले Arrest their momentum. ले. Oh, disarm poachers execute as they prepare. You're the one we're looking for, and you brought a friend. How unfortunate. One less human to worry about. The lamb returns to the wolf. Pruning is in order. Disarm a poacher's execution as they prepare to blast their attack. Use a mandrake against an enemy. ठीक है, mandrake है मेरे पास. I think है. Back for more. Not the brightest. Keep the enemies airborne. इसके लिए मुझे वो यूज करना पड़ेगा. What have you done? Stop! I'm afraid of heights! I'll put you in a stew. Marvelous strike. Lay down! You are phoningly inevitable! So disarm a poacher. ये तीसरा वाला क्या है? disarm a poacher execution as they prepare to blast. मैं बस डॉज कर रहा हूँ इस समय क्योंकि मैं बिल्कुल बताया था. We don't have time. We need to free her now before more show up. ये कैसे करेंगे? Nice. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. ये और पहुंचा था लेकिन अब तो ड्रैगन आजाद है अब नहीं बचने वाली है.
कच्चा खा जाएगा वो। इन दोनों को भी जलाने वाला था भाई ये तो। बच गया। ये दोनों बच गए। This way. ओह, ये तगड़ा था गुरु, कुछ कहो तो। था भाई, कुछ था ये, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हो गया टाइप। That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. So what should we do with Hag? Do you think the poachers will... No, what should we do with Hag? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Do you think the poachers will... Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. Let's get out of We here. aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. चलो एक टैलेंट पॉइंट मिला हमें, प्लस 75 HP। ओके, मेरे को तो भाई ये मौसम सही लग रहा है यार, बहुत सही, विंटर। It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ठीक है भाई, ये कोई नया स्पेल सिखा रही है अपने को। प्रोफेसर वीजली बोल रही है कि मेरी क्लास में आओ तो वो जल्दी से मिली दब जाती। भाई कृपया कर इसे आप यहीं रख रहने दीजिए। ये सब चीज़ें खोल ली अपन ने, यह किला नहीं खोला। थंडर ब्रू, ठीक है। सो लेट्स सी अपने पास कौन कौन से क्वेस्ट हैं। ओके, तो कंप्लीट। ओके, हमें प्रोफेसर वीजली के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, को बुला रही है। ठीक है। कलेक्ट फील्ड गाइड पेज इन द अंडरग्राउंड हार्बर। कलेक्ट फील्ड गाइड पेज फ्रॉम द बुक ऑन इंटरमीडिएट ट्रांसफर इन लाइब्रेरी। ओके, तो उसके लिए हमें अंडरग्राउंड हार्बर तो जाना पड़ेगा ना, यहाँ है ना। कहाँ जाए? बाथ हाउस पे चले जाओ। लेट्स गो। थोड़ा भाई ये लोडिंग में टाइम लगता है यार।
ऑल राइट ऑल राइट। अबे लेकिन हॉगवर्ट्स देखो ठंड में बहुत सही लगता है यार। एक सीजन निकल गया हमें हॉगवर्ट्स में। एक मतलब ठंड आ गई तो स्प्रिंग भी तो आ गई होंगी। स्प्रिंग का इतना पता नहीं चलता ना, मॉनसून वगैरह दिखा नहीं सकते गेम में ज़्यादा। तो एक साल ही होने वाला है ऑलमोस्ट 4 महीने बचे होंगे इस साल को। उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने 5th ईयर कंप्लीट होने वाला है। मतलब इस कैरेक्टर्स को 5th ईयर में एडमिशन मिला है ना, और इसका लेकिन फर्स्ट ईयर है हॉगवर्ट्स में। 5th 6th 7th यानी कि 3 ही साल पढ़ेगा स्कूल में। What are you up to now? Collect the field guide page in the undercraft, bro. हम तो अंडरक्राफ्ट में, वो फील्ड गाइड पेजेस अंडरक्राफ्ट हार्बर। लेट्स ट्रैवल हियर। कितना सही आ गया वो। ओके So this is the underground harbor. वही मैं बोलना चाह रहा था। वाह यार कैरेक्टर। Revelio. चलो यहाँ से अपने को सीक्रेट देखो, इधर पत्थर उचका दिया बनाओ पानी में। 1 2 3 4 यार। अरे वो रोको वो वाली जो चेस्ट है ऐसे नहीं खुलेगी वो। उसके लिए हमें पहले डिसल्यूजनमेंट लगाना पड़ेगा, छुप के जाना पड़ेगा उसके बाद। अब क्यों लगा रहा? अब थोड़ी ऐसी चेस्ट है। अरे यहाँ पे घोस्ट है। यो The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. वो बात नहीं करती किसी से, इंट्रोवर्ट घोस्ट है वो। Your gas slots are full. ये चीज़ बुरी लगती है। एक काम करूँ मैं हॉग्समीड जाके सब बेच के आता हूँ, ठीक है? 5 मिनट का काम है भाई। फालतू चीज़ें जो भी है ना मेरे पास, बस मुझे याद रखना है कि यहाँ आना है मेरे को। तो मैं यहाँ से यहाँ वो हूँगा अगली बार, है ना? ये पॉइंट याद रखना मेरे को। तो हॉग्समीड चलते हैं, किसी भी सेलर के पास चलो। हाँ यहाँ से थोड़ा जल्दी पड़ता है ना ये। जी पुश। क्या नहीं तो नई नई चीज़ें ले ही नहीं पाते इस चक्कर में। ये लोडिंग थोड़ा टाइम ले लेता है भाई। सम कॉस्ट फीचर्स रिवॉर्ड्स लाइक न्यू स्पेल्स और कलेक्टिव आइटम, ठीक है? कंसल्ट द कॉस्ट लॉग टू हेल्प यू डिसाइड व्हिच कॉस्ट टू कंप्लीट नेक्स्ट, ठीक है? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. तो ये हमें बार बार आना ही तो पड़ रहा है ना यार। भाई हॉग्समीड भी अच्छा लग रहा है विंटर में। Hello there. Hello. In the market for potions, are we? Hello there, mate. How are you? What can I do for you today? Oh, I just want to solve this. सुपर लिखा हुआ है इसमें। अबे यार ये इसको लिए रूम ऑफ रिक्वायरमेंट ले जाना पड़ेगा, है ना? अरे ये तो थोड़ी अच्छी वाली है ना। ये क्या है, क्विडिच के पे बेच देते, इसको बहुत पहन लिया, खराब ही हो गई होगी, धूल मिल लग गई होगी। इसके 200 हैं भाई। ये 90 वाली चीजें इनको बेच ही दो, इनका क्या काम है? I hope to see you again.
चलो अब मैं ना ये वाला वो पहन ले रहा हूँ। वैसे अंदर का कुछ खास फर्क पड़ता है नहीं, तुम कुछ भी पहनो बट स्टिल अच्छी वाली चीज ही पहनो ना। What can I do for you today? ठंड भी तेज है भाई अब तो। I hope अच्छा to इससे see you और क्या again. पोशन मोशन Farewell और for क्या क्या now. है? रेसिपी फॉर थंडर ब्रू रेसिपी, अच्छा ये ले लेते हैं। A wise decision. Thanक you. इनविजिबिलिटी पोशन रेसिपी अपने पास है कि नहीं? आई थिंक नहीं है, ले लेते हैं। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास I hope to see you again. Farewell for now. ठीक है। अभी मैं एक चीज और कर लूँ, जाऊंगा कहाँ? मेरे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अपने को वो जितनी भी अनआइडेंटिफाइड चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और उनमें से कुछ अच्छा होगा तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर उनको बेच बाचू देंगे। क्या फालतू है वो स्टेरेज घेरते, उसके चक्कर में नया है, आइटम्स नहीं ले पाते अपन। Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. ठीक है भाई, समझ गया। ओके सारे अनआइडेंटिफाइड चीज़ें आ चुकी हैं, जो भी अनआइडेंटिफाइड था। तो हाथ में तो कुछ नहीं था अपने पास, इसमें भी कुछ नहीं था, हेड बियर में भी कुछ आइडेंटिफाइड नहीं था, नेक बियर में भी कुछ आइडेंटिफाइड नहीं था, क्लॉक में था। तो ये तो अपन से इंक्रीज वेनमस टेंटिकल डैमेज, ठीक है। तो अबे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, देखो देखो ये ऐसी है जो ठीक है, ओके ओके। ये लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, इसमें अपने को इंक्रीज डैमेज विद डिफेंडो भी मिलता है। तगड़ी चीज़ है भाई, ये पहनते इन दोनों को बेच दूंगा अभी मैं। सही है, ठीक है। आकाश कौशल हेलो, ठीक है भाई। अच्छा हेलो भाई आकाश भाई, कैसे हो? बढ़िया सब, क्या हाल है? एक क्या ही हाल होंगे, अभी तो देखा मैंने। वाइट वाले का क्या करना है? कहाँ है वाइट वाला? रुको रुको रुको, कहाँ था यार? गियर, अच्छा ये मस्त तो लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये वाला जो है ना वाइट वाला, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या है इसकी थोड़ी ये कम है, ये ऑफेंसिव स्किल्स वगैरह। तो ये वाला करेंगे, ये वाला इसमें 61 लेवल का है, ऑफेंसिव 61 है। लेजेंडरी आइटम, लेजेंडरी, समझ रहे हो? बिग फैन, अरे धन्यवाद धन्यवाद, आप जैसे फैंस हो मेरे तो क्या बात, मैं तो धन्य हो गया। यही तो चाहिए जीवन में, और क्या ही आशा कर सकता हूँ मैं जीवन के साथ। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ भाई। एक बार और हॉक्समीड में, ये सी पोशन वाले के पास। ओके भाई और बताओ भाई, सब कुशल मंगल? बीवी बच्चे सब ठीक? परिवार ठीक है यहाँ मिलना अपने को। Do let me know if I can be of any assistance. ज़्यादा बातचीत नहीं तेरे, हम बस बिजनेस करने आए, बिजनेस कर। ये ले, ठीक है, अब बोलना मत। I hope to see you again. अरे farewell for now. नहीं मानेगा भाई, मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ। अरे धन्यवाद धन्यवाद, मैं अब क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी खुशी मिल रही है मुझे कि मैं तो धन्य हो गया भाई। तो अपने को यहीं जाना है, देखो यहाँ से।
अपने को अपन मेन मिशन पे फोकस करना है। ये सब तो अपन ने कर लिए। द टारगेट लॉक इज इफेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ से अपने को वही रास्ता, वेयर टू गो, ज़्यादा दूर नहीं है वो। ओके, यहाँ से ये गए। देखो भाई, लिफ्ट देख लो तुम, हैरी पॉटर की दुनिया में लिफ्ट ऐसी रहती हैं, ऐसे अपने आप खुलती हैं, अपने आप लग जाती हैं, और अपने आप बोलना भी नहीं पड़ता, और अपने आप नीचे ही ले जाती हैं। So this is the underground harbor. Revelio. Revelio. चलो यहाँ पे अपने को ओरे अल्जाइम असाइलम मास्क मिला है। अनआइडेंटिफाइड फेस, अरे इसकी बहन। रिवेलियो फील्ड गाइड कलेक्ट कर ली मैंने, यही कलेक्ट करना था हमें। लेट्स गो। और क्या, अब कहाँ जाना है? ऑन इंटरमीडिएट ट्रांसफर के अंदर लाइब्रेरी जाना है अब हमें। यहाँ चला जा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से लाइब्रेरी शॉर्टकट है, शॉर्टकट ले लेते भाई। फिर आकाश भाई, आपने जवाब नहीं दिया यार, बीवी बच्चे कैसे हैं? भाई आप कितने दिन से खेल रहे हो? देखो भाई, ये 9वां दिन है, should be around here somewhere. 9th पार्ट है। चलो तो यहीं पे है अपना वो जो चीज हम ढूंढ रहे हैं। Intermediate transfiguration. हाँ भाई, फील्ड गाइड पे ढूंढना है हमें, तो इसी से बात करनी होगी लग रहा है। Professor Weasley asked me to मस्त है भाई, get something अरे from बहुत that बढ़िया। book. सब कुशल मंगल रहे, सब खुशी रहे, यही तो चाहते I'll हैं give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. रेवनक्लॉ वाले हमेशा लाइब्रेरी में देखेंगे a तुम्हें। small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. ठीक है। None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. भाई एक क्विज कराना चाह रही They है। don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my भाई easiest आप questions. इतना अच्छा खेल लेते हो, अरे क्या ही बोलूं, मतलब मैं बचपन से यही तो कर रहा हूँ, मैं इसी चीज में थोड़ा बहुत हूँ। मतलब गेमिंग कम्युनिटी, ठीक है, अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। That could be fun, ठीक है। A quiz sounds like fun. Splendid. जवाब Just देना a few भाई अब। questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? गोल्डन स्निच जो था, हैरी पॉटर की आपने मूवी में देखा होगा, क्विडिच मूवी में, वो गोल्डन स्निच बॉल रहती ना, तो वो बॉल के इन्वेंशन से पहले कौन सी चीज क्विडिच मैच में यूज होती थी? तो द स्नेक बर्ड, द गोल्डन स्निगेट, क्या था, क्या हो सकता है इसका आंसर? इट्स टफ ब्रो। जेई के क्वेश्चन से ज्यादा थोड़े इजी रहते हैं यार, लेकिन ये थोड़े मुझे टफ लग रहे हैं। नहीं है, गोल्डन स्नेक क्या हो सकता है भाई? यार सही जवाब देना चाह रहा हूं मैं। गोल्ड द स्नेक बर्ड ही होगा भाई। 3 ठीक है भाई। आकाश भाई आपकी बात मैंने मान ली, क्योंकि आप मेरे नाम वाले हो, ठीक है, और आप नेपाल से भी हो ना, तो आपकी बात मैंने मान ली। स्नेक बर्ड लगा दिया। No. Incorrect. अरे बैग। The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck?
क्या यार कौशल भाई, आप मतलब यार ऐसे निकालोगे गेट? कोई बात नहीं, होता है, एक आध क्वेश्चन गलत निकल जाता है। विच क्वेश्चन इज कॉमनली रेफर्ड एज लिक्विड लक? देखो, फीलिक्स फैलिसिस, द पेपर ऑफ पोशन, पीपर ऑफ पोशन। इसमें कौन सा करूं, बताओ, बताइए आप। लव फ्रॉम नेपाल, अरे धन्यवाद। हमें भिन्न भिन्न मतलब इस दुनिया में से भिन्न भिन्न देशों के लोग चाहिए हमारे चैनल पे, ताकि हमारा जो चैनल है फैल सके। इसका आंसर बताइए आप, तो क्या कर सकते हैं इसका हम? द पेपर ऑफ पोशन हो सकता है, एलोस्टिक ड्रॉट। आई थिंक नेपाल। ठीक है भाई, लव नेपाल। ठीक है शाह जी। क्या कर दूं यार, बता दीजिए सर आकाश सर। विच पोशन इज कॉमन लिक्विड लक, क्या ही हो सकता है? चलो ठीक है, अब आप नहीं बता रहे तो मैं फीलिक्स Felicis. Well done. Oh. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? क्या ही कहूँ मैं, मतलब क्या तारीफ करूँ मैं मेरी, मतलब गेम में भी मैं एकदम सही आंसर देता हूँ, बताओ। अरे यार, द टेल ऑफ थ्री ब्रदर्स इन्वॉल्व विच मैजिकल आर्टिफैक्ट? थ्री ब्रदर के द फाउंड रिलिक्स, डेडली हेलोस ना हॉर्क्यूलेक्स। क्या अभी हमारा जो हैरी पॉटर एक्सपर्ट है ना, वो यहाँ रूम पे नहीं है, नहीं तो वो सही आंसर देता सबके। डेथली हेलोस तो नहीं सर। इसका आंसर पता है आपको? द टेल ऑफ थ्री मैजिकल आर्टिफैक्ट। तीन भाई, अरे डेथली हेलोस ना। ठीक है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है भाई। The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Which ball in the Quidditch is the largest? Quidditch ball, हाँ रुक जा। स्नेच सबसे छोटी, ब्लेजर और कॉफर में से हमारे जो हैरी पॉटर के जो एक्सपर्ट हैं कंफ्यूज है वो थोड़े, उनको शायद थोड़ा समय लग सकता है कि ब्लेजर और कॉफर में से कौन से हैं, तो वो अपनी मेमोरी पे थोड़ा जोर दे रहे हैं। क्या सबकी आइडेंटिक मेमोरी नहीं होती? आपको नेपाल का मजाक क्यों करते हो भाई? मैं नेपाल का कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ यार आकाश भाई। आई लव नेपाल। मेरा एक दोस्त भी है जो नेपाल से ही है। सबसे बड़ी कौन सी है बोल रहे हैं ना? चलो सबसे बड़ी भाई कॉफल है, हमारे हैरी पॉटर एक्सपर्ट बोल रहे हैं। The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Polyjuice potion allows the drinker to change species. I think true. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to कितने change क्वेश्चन है भाई? I think एक आध दो और होंगे। I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. ठीक है भाई। I like more question. इससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछते क्या? मजा तो आ रहा था। I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Council
इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस ऑफ विजार्ड, ऑर्डर ऑफ मर्लिन ऐसा कुछ सुना ही नहीं है। ऑर्डर ऑफ मर्लिन तो वो गॉड मोड का कुछ है। The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Which dragon breed is Ukrainian? नहीं भाई, एंटीपोडियन। कौन सा है भाई इनमें से? कौन सा ड्रैगन ब्रीड स्मॉलेस्ट हो सकता है? अपनी जीओटी में कौन सा था वो? द लास्ट ड्रैगन, वो सबसे छोटा है। द यूक्रेनियन आयरन बैली। नहीं नहीं नहीं, इसके तो नाम में ही आयरन है, ये हो ही नहीं सकता। वाइपर टूथ, ओपल आई यार। The Antipodean opal eye. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian viper tooth. Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogwarts? हाँ यार, दिमाग पे असर पड़ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, हाँ इसलिए शायद वो थोड़े सही नहीं है अभी इस टाइम पे वो। भाई यार ऐसे कौन था, मैंने क्या, ये तो इसको भी नहीं जवाब पता होंगे, पता है? नहीं, ये हेंगरेट ऑफ वुडक्राफ्ट है। Hengist of Woodcroft. That's right. It is believed क्योंकि गेम में that बताया Hengist था used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul. Hide behind, Demiguise, क्योंकि हाइड उसके नाम में है। A demiguise. Yes. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? लेथरफोल्ड का कौन सा रिपेल कर सकता है? पेट्रोनस शाम, नॉक बॉल जिंक्स। लेथरफोल्ड का मतलब क्या था पहले अपने को वो जानने देना, फिर अपन जानेंगे ना, क्योंकि अपन हिंदी में मूवीज देखी है कि नहीं? सही बात है। अच्छा हाँ, पेट्रोनस है भाई, यही वाला ना? अरे ये वो वाले है ना, ये ओह तम पिशाच। The Patronus charm. Well done. The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? लावारन दे एवेंजेलिन ऑफ गैम्प गैम्प कर दूं क्या? यही Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Hogwarts motto, knowledge is look before you leave, never tickle a sleeping. Knowledge the real magic, है ना? Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ashwinder. भाई अब कितने क्वेश्चन नहीं, ज्यादा गेट से तो कम ही है। रूनसोर कौन हो सकता है? देखो, which magic creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Basilisk. The basilisk. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. भाई ये तो The left हरमाइनी head की is the मम्मी होगी। planner, the middle is the dreamer, and the Recall right है। is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? इल्वामोरी एमएस देखो। लिवरमोरी स्कूल ऑफ विच, अरे भाई इसके बारे में पता है पर कहाँ है वो नहीं मालूम। यही होगा भाई। अमेज़न माउंट ग्रेलॉक में तो नहीं है, क्योंकि ये उसी टाइप का कुछ लग रहा है। या तो प्रेनी से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, एमरल्ड फॉरेस्ट में भी तो हो पा रहा है।
माउंट ग्रेलॉक लगा दे रहा हूँ मैं। Mount Greylock. Well done! Oh! The American school was founded in the 17th century क्या ही बोल दूँ by भाई मैं। Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? था तो वो क्या नाम था वो मूवी का? आवरा कडावरा। हाँ कौन सा? हिंदी में ट्रांसलेट करके आई थिंक ये होगा अमृतनिया। भाई अपना हीरो कितना परेशान लग रहा है भाई। उसकी वो कह रहा होगा यार दुश्मन मारना इजी है, ये बाबा क्यों ले रहा है मेरा? अमृतनिया है ना? Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person according to what they मैं find तो अभी भी कह रहा हूँ हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। such as dusty book covers or are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. अरे कर लेते, कर ले, मजा आएगा। Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Emmerich the Eagle. I think yes, Sir Egerburn. Sir Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? If a chaser keeps their hands on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? बताओ भाई, expert? Chaser keeps their hand on quaffle as it goes through the goal. भाई अब तू बता मेरे को फाउल के नाम इंग्लिश में कैसे पता होंगे? फाउल कर रहे बस इतना। Blatching. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. Question answer की A book bite कहाँ from a मिलती है? mackled Amazon की link भेज देना has the मेरे को। unusual side effect of causing what? इस क्वेश्चन वाली बुक नहीं आती? अच्छा। यूपीएससी भी टफ है। सही बात है भाई। मैकल्ड मैलक्लॉ, देखो मैकल्ड मैलक्लॉमलॉ है तो या तो उसके वीट फीट होंगे या फिर हैरी आईज होंगे, बट क्योंकि क्लॉ है तो फीट। Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What plant excretes stink sap? स्टिंग सैप तो आई थिंक फ्लेक्स बीट नहीं, फ्लेक्स बीट तो नहीं करता। मेंबर्स में बना इन दोनों में से कोई हो सकता है। यही होगा। Mimbleless Mimbletonia. Correct. The Mimbleless Mimbletonia plant secretes stink sap as a defensive mechanism when touched. The pepper क्योंकि up फ्लेक्स बीट तो अपन ने भी potion उगाई evolved from थी। a remedy created by which 12th century wizard? The pepper potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? यही होगा। नहीं, Basil Flack. Basil. Basil Flack. That's incorrect. The answer was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, लोग स्ट्रीम Glover छोड़ के भाग Hepworth गए। would expand on Limfrid's previous work to create the pepper up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? नहीं भाई, क्या कर रहा है? अब in the wizard or the hopping pot, what does the elder wizard leave for his son on the hop? His wand. A single slippers, ये तो नहीं आते होंगे। Yeah, smaller pot. क्योंकि wand तो सबकी अलग-अलग रहती ना। A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard. भाई नशा but there करके are a लिखे few क्वेश्चन। versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. सब The गलत बता रहा है। Snallygaster is native हाँ to भाई, which क्या region करूँ of the मैं?
The snaily gas that is the native to which region of the world? Scottish The Highlands. Scottish Highlands. No, the answer was North America. अब The तो part आदत सी है bird, भाई. part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune? I think a last question है. Who is the Muggle Knight feature in the font? Luckless चले अपन तो luckless ही कर दे वैसे भी luck नहीं Sir Luckless. Correct! Oh! The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Asha, Oh, Altheda I and adore a Amata. story that ends with a twist. The world's largest कोई kelpie नहीं is भाई फिर also known by लव what other नेपाल name? से. अरे ठीक है साहब जी, आपका ही प्यार तो चाहिए मुझे. कैल्पी आई थिंक यही होगा. लग्नन मॉन्स्टर गलिंगोत्तुगा. Galangantua. No, the answer was the Loch Ness Oh. Monster. ये The बोला Office भी of था मैं. Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? कौन हो सकता है? First Minister of Magic. गैम्प गैम्प कर देते भाई. उनके साथ जा भाई पिछले बार गया उनके साथ Ulick Gamp. Yes. Oh! Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. भाई उसको You've बहुत तगड़ा answered all of my नॉलेज है भाई. questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. अगली बार आएंगे अच्छा भाई तेरा नाम बता दे I मुझे. put the book back on the pedestal for you. बड़े होकर तेरे को Revelio डेट to make करूंगा quick work मैं. of this. क्या नाम है इसका? भाई वो तो मर गई सोफिया मोफिया. भाई इनने पोशन भी दिए थे किसने? 3-4 ही. मेहनत का फल दिया है. प्रणाम माते प्रणाम प्रणाम. दंडवत कर रहा देखो अरे वो ऊपर कम्मा लगा रहा हूँ मैं. अब एक मुक्की मार दे देख रहा है उसकी चाल, देख रहा है तू? ये चार पे नहीं जाना कभी भी यही तो ट्रैप है हाँ ट्रैप है. See you. अभी मुझे मेरे Revelio. चलो फील्ड गाइड ले लिए लेंगे. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. चलो अब हमको वीजली की क्लासेस लेनी है. भाई इतना टाइम अपन ने फालतू क्विज़ेस खेलने में लगा दिए भाई. वो लड़की भी नहीं मिली. सोफिया मूफिया नाम था उसका, पर मस्त क्विज थी वो. कोई नॉलेजेबल हो ना जिसे सब पता हो हैरी पॉटर. ओए यहाँ से नहीं जा सकते क्या? Revelio. नहीं यहाँ से नहीं है. ठीक है तो मैं देख ले रहा हूँ. शॉर्टकट अपना लेते हैं अपन, अपना नहीं तो. हाँ ये ठीक है. Off on another adventure, are चलो we? भाई ये रही अपनी ट्रांसफिगरेशन मैजिक की क्लास. Revelio. Professor Weasley, how are you? Very good. भाई मस्त क्लास है इसलिए. ये बैठी हुई प्रोफेसर वीजली. हेलो. You have a new spell to teach me, Professor? Yes, the transformation spell. But first, I'd like you to carry out a couple of tasks which will help you to complete your field guide. ठीक है Attend भाई. my transfiguration अच्छा. class once you've ठीक है, done ठीक them, है. and we can begin the lesson. गुड नाइट. गुड नाइट. क्या बात कर रहे थे? जल्दी सो जाते हो? You have a new spell to teach me, Professor? Yes, but भाई युवा है हम. हमें रात भर जाग के देश की सेवा करनी चाहिए. हमारा एक कर्तव्य है. हम चौकीदार हैं तो देश के. ठीक है चलो मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि प्रोफेसर वीजली की जो क्लास है वो सुबह शुरू होगी तो मुझे सुबह का इंतज़ार करना होगा. यहीं भाई मैंने मस्त बोरिया बिस्तर डाल के सो गया. सब आ गए.
ओह उल्लू। ये प्रोफेसर बीजली अपनी वो वाली जैसी हैरी पॉटर में वो थी ना जो कैट में ट्रांस। Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. देख लो भाई जादू देख रहा है। तितली बना दी उसने। You all know what to do. चलो हमें भी ट्रांसफॉर्म करना है चीजों को, मतलब है ना ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। तो इस स्पेल का नाम ट्रांसफॉर्मेशन ही है। थोड़ा स्पेनिश में स्पेनिश कुछ नहीं लगा रहे। कप है स्पेल। ओह देख लो तितली बना दी हमने वो पर्ल को। What a magic! Beautifully done. ना ठीक है तो हम इसको यूज करें। चलो आओ ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक। ये रहा। किस में यूज करें बताओ। इनको अपन बदल के देखते हैं। अरे नहीं होगा, वो सिर्फ सर्टेन ऑब्जेक्ट भी हमें कर पा रहे हैं ना। इससे बात You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. The assignment has, despite spending so much time on assignment. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Achha. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Were you meeting with Professor Black house elf and exploring of various cave down by lake connecting in? नहीं नहीं ये प्रोफेसर बीजली को नहीं बताना। Not at all. I was intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. कोई सा एग्जाम होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म है OWLs। कुछ ऑनगोइंग कुछ होगा। हाँ चलो इस पे अपन ट्रांसफॉर्म मैजिक यूज कर सकते हैं, तो इसको किसी चीज में बदल ये इसको डब्बा बना दिया। अब थोड़ा उसको चार्ज होने दे अपना मैजिक। Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need in the goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Gobbledygook, ठीक है भाई। तो अभी अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देख लूँ मैं। इन द शेडो ऑफ माइंड स्पीक टू अमित ऑन गोबल्डीगुक, क्योंकि अमित जो है वो गोबल्डीगुक जानता है। मीट सेबेस्टियन एंड ओवरलैप। चलो तो हमें लॉर्ड गुक से पहले मिलते हैं इससे, क्योंकि सेबेस्टियन से तो हम मिल ही लेंगे। लॉर्ड गुक हैज आस्क्ड मी टू मीट हिम एट द गोबलिन माइन
साउथ ऑफ हॉगवर्ट्स एंड आस्क दैट आई ब्रिंग सम, क्योंकि ये जो है अपना ये रैन रॉक के बारे में बता सकता है कुछ कुछ। ये गॉब्लिन है ना भाई अच्छा खासा, तो हम इससे जाके मिलते पहले। अमित एस्ट्रोलॉजी विंग में ही होगा और कहाँ होगा? चलो तो फास्ट ट्रेवल कर लूँ मैं। नाइस, बस थोड़ी लोडिंग का वेट करो। तो आज अपन इसको जल्दी खत्म करते हैं यार, इसके मैन मिशन, क्योंकि नया गेम स्टार्ट करेंगे फिर तो इसके साइड मिशन बाद में करते रहेंगे टाइम अपने पास। तो चलो ऊपर जाना अपने को एस्ट्रोनॉमी क्लास में, जहाँ पे तारे As a मारे Dalian key, I wonder where it might lead me. अच्छा तो मैं एक और चीज बताऊं, देखो वैसे मैं ये करना नहीं चाह रहा। Lumos. ये लूमोस हुआ। अब यहाँ पे जो जगह दिखाई ना वो मुझे ढूंढना है, ये कहाँ होगी। ठीक है, अगर मुझे ये जगह मिलेगी ना, ये ऊपर है ये ना, तो वहाँ से एक तितली मिलेगी, वो तितली लेके आनी है। हाँ ये रही वो जगह। तो यहाँ से आई थिंक ये नहीं, ये तो नहीं है यार ना। हाँ ये रही तितली, है यही थी ना वो फोटो में जगह। और इस तितली को नीचे लगाऊंगा ना मैं, तो वो पिक्चर पेंटिंग बनेगी। अबे यार मैंने गलत कर दिया उसको। Lumos. तितली आ गई, वो बोट पे बैठी हुई तितली को मुझे नीचे पेंटिंग में उसके साथियों के साथ जोड़ना है। साइड को इस टाइप है, मतलब कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स फालतू अच्छे लगते हैं करने में। ये एक फील्ड गाइड में लेकर शायद तक है ना। हाँ Hello there. हेलो देयर। अरे तो ओबी-वान केनोबी का डायलॉग बोल रहा है। और भाई अमित। Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. इसको He's ट्रांसलेटर waiting बना for के me ले जा near a रहे हैं goblin mine. लॉर्ड Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. सरोना पे सब भरोसा करते हैं। सरोना बेसिकली एक ट्रांस कैरेक्टर है जो कि बाहर चलाती है हॉग्समीड में। ये बात बार बार बताना जरूरी है। ठीक है, तो सरोना कोई लड़की नहीं है, ट्रांस है वो। Have you met a goblin? Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. How well do you know gobbledygook? You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. ठीक है, समझ गया। चलो ठीक है, चलते हैं। Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. ठीक है। Okay. Revelio. तो हमें तो उधर ही जाके मिलेगा, माइन के पास ही। तो माइन कहाँ है, मैप में देख लूँ मैं। ओए बहुत दूर जाना है भाई। वर्ल्ड मैप खोलने दो, दुनिया का मैप है ये।
माइन तो यहाँ है लेकिन यहाँ पे से हम ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, यहाँ पे फास्ट ट्रेवल कर लेता हूँ, यहाँ से चलेंगे पक्षी लेके उड़ के। I've always said that travel काफी डिटेल्ड broadens मैप the है लेकिन mind. इसका मैप ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन जितना है वो इट फील्स बिग और डिटेल बहुत है। ओह पक्षी, पक्षी जब से लिया अपन। Past the high wing. हाँ उड़ गया भाई अपना। ठंड आ गई भाई देखो। अबे ये देखो कार चल रही है। नहीं मत देखो, चलने दो उसको। माइन एंट्रेंस के पास। ओ Marlin's beard. नहीं क्या हो गया भाई देखो, कुछ नहीं। High wing, go. गो ठीक है, बस ज़्यादा ऊपर भी मत जा इविंग। भाई हम और कुछ राइड नहीं कर सकते क्या? No need to race now, my friend. ओए How nice to see you, my young friend. इससे उतरने का मन ही नहीं कर रहा। जाओ ये फुग्गे फोड़ के Let's आते go. आओ। Come on, high wing. ओह Past the high wing. नहीं भाई इससे नहीं, वो ब्रूम से अच्छे फूटेंगे, ब्रूम से फोड़ेंगे अपन। चलो भाई चलो हाई विंग इधर उतर जाओ, एक काम करो इधर। अरे नहीं समतल जमीन चाहिए इनको। लेट्स गो। मर्लिन्स ट्रायल है, इससे Could क्या it होगा? be a Merlin trial? अच्छा ये वो पजल मजल रहती है मर्लिन ट्रायल। Revelio. अच्छा ये जो है अगर हम वहाँ लाएंगे तो कुछ होगा ना। Accio. मर्लिन ट्रायल की लोकेशन कहाँ है? ओए गायब हो गई क्या? Revelio. कहाँ गया भाई वो? बर्फ का गोला कहाँ गया वो? कुछ उसके लिए शायद मुझे फिर से यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, तब देखे वो। Revelio. ना होगा। लेट्स गो। ये लॉर्ड गॉक ये रहा। हेलो लॉर्ड गॉक। A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives,
Perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. But you have no choice. You should have expected that. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can we don't do it decipher here, written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Can you tell more about the doors? What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. ठीक है भाई, ठीक है. बहुत तेज से बात कर ली भाई. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Where is disillusionment? ये रहा. I'll be quiet. आओ. चलो तो हमें वहाँ जाना है. अभी यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. ऐसे अभी तो हम ऐसे भी जा पा रहे हैं. बट डोर जब दिखेगा ना, ऐसा अंदर साइड, तो आई थिंक यही वो डोर. वो देखो उस पर वो आँख लगी. वो आँख जो है ना वो खुल जाती है. जैसे मैं बताऊँ तुम्हें. ये आँख खुल गई. Door is looking at us. अभी अपने को खोलने नहीं देगा. अपन जाते हैं मस्त दो आखिर अब अपने को देख ना पाए. अब आँख सो गई वो. Right. Don't wish to be seen, do we? ठीक है, तो इसको पता नहीं चलेगा कि कोई आया भी है कि नहीं. गेट खोल दिया. चलो गुफा में चलते. Loading. यही जगह वो केव. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. अमित ठक्कर.
हमें ठक्कर दिए हैं। चलो भाई, अब इसको एक्सप्लोर करना है ना अपने को। I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. ये लिफ्ट से ही जाना है हमें, और These लिफ्ट को machines लिए operate on I think steam. ये फायर जलानी पड़ेगी, Interesting. Confringo. क्योंकि स्टीम से जल्दी नहीं है ना। ओके, मुझे नहीं पता था कि इस मैजिकल वर्ल्ड में स्टीम का यूज़ होता है। जादू टोटका चलाओ भाई। I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. यहाँ से क्या करना है? ये देखो इन्होंने लॉक मॉक तो दिया है। इससे कुछ बंद हुआ है। यहाँ से रॉक स्मोक्स आ रहे हैं। अच्छा ये लिफ्ट है, तो फालतू चीज़ें। ठीक है, मैन अपना यहीं से था। थोड़े पीछे हो जा। How nice of you to stop by. कौन है भाई? कौन गॉब्लिन है? कोई गॉब्लिन वॉब्लिन? ओ रुको रुको, कोई है यहाँ पे। डिसल्यूजन। Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Yes, of course. अमित भाई तू इधर आ। तीन लौंडे वहाँ पे, बहुत लौंडे हैं भाई, 3 नहीं है 4 हैं। तो एक काम Matter of time till Ranrock sets things right. Petrificus totalis. इसको तो मैं स्टेल्थ से मार दिया। Watch your step round here. Oh! Wait a second. Find him. I work best till you're dead. अरे easy तो भाई, ये तो अरे ये तो obviously easy That है। was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. ठीक है। अच्छा ये भी वो इनविजिबल वाला ही है काम इनका, है ना? Revelio. ठीक है, इनविजिबल तो ठीक है। ऊपर क्या है? Watched by a door. ऊपर कुछ नहीं, ये पानी आता है यहाँ पे। एक काम करो, थोड़े पीछे से चलो, यहाँ से इनविजिबल होके निकलते हैं। ठीक है भाई, दूसरे नहीं देख I'm good पाएगा। at sneaking about. You'll see. देखते हैं। Revelio. आई थिंक ऊपर जाना है हमें, है ना? तो क्या यहाँ से जाएं? I feel like a character from one of the adventure books I read during the नहीं summer हमें जाना है holidays. यहाँ, लेकिन ऊपर हमें कुछ मिलेगा, स्पेशल आइटम वगैरह। ऊपर जाने के लिए क्या है? आग माग जलाना है। Arresto momentum. Confringo. कुछ हो तो रहा है। अच्छा यहाँ से ये इसको खींचना है। शायद एक गेट खुल गया क्या? कुछ हुआ तो है। हाँ गेट अब खुलेगा, सॉरी हल्का सा टाइम लगाएगा वो। नाइस। इसको क्या डिपल्सो? अबे नहीं बे,
इसको बताऊँ ऊपर से कुछ करना है, रुको वहीं से कुछ होगा। इसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा ना। यहाँ से भी कर पा रहे हैं हाँ, मेरे को लगा उधर ही से जाना है। नाइस, ठीक है समझिए। अरे कॉइन्स के लिए आ रहे, नहीं नहीं चेस्ट है तगड़ी वाली। यहाँ पे हमने अनआइडेंटिफाई, पर इन्होंने अच्छी खासी स्किन्स बनाई यार, मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह रहते हैं ना। हमें चेस्ट में वही चीजें तो मिलती हैं बस। Let's go. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. Revelio. यहाँ पे ये दो चीजें तो हैं ये। Search. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Revelio. ठीक है। Clever. You will regret. I don't think you can. No! ये क्या है? Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. Revelio. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. अच्छा यहाँ से तो हम आए थे ना। नाइस। आई थिंक यहीं जाना है हमें। Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? क्या Let बना me क्या know रहे if we हैं? see any more giant plans or robot बना schematics. रहे हैं क्या? We can't return to Lodgok empty-headed. Lumos. अबे Lumos नहीं बे, पागल है क्या? I'll be quiet. The area's still clear, if anybody cares. Who's there? आराम आराम से मार देंगे भाई इनको। पूरे स्टेल्थ में। Who is it? लो भाई।
Red Goblin. बेटे Confringo! Expelliarmus! Descend! Oh, this healing is too much! Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. Revelio. यहाँ पे क्या क्या है गाइस बता दीजिए भाई यहाँ पे अच्छी खासी पजल है तगड़ी वाली Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. I think हमें इसको जलाना होगा और उसको खींचना होगा इससे हुआ क्या मुझे तो नहीं पता बस मैंने वो कर दिया जो मुझे दिख रहा था Revelio. ठीक है आहा वेरी नाइस कलेक्टिव टावर कुछ मिला वो भी था अब यहीं से जाना होगा क्या यहाँ से नहीं खोल सकते मेरे को लगा कोई है वहाँ पे वो फिंगर मिलिंग टाइप कोई अच्छा यहाँ से ये खोला सीक्रेट लोकेशन हाँ Devil's snare. Nasty stuff if देखो we're not जाना तो हमें careful. यहाँ है Not an entanglement we need right now. but what is there अरे ये वाला जो गेट है आई थिंक वो बंद है तो यहाँ कुछ नहीं है ठीक है भाई नहीं तो अरे वो रहता है भाई वहाँ देखते पाओ कुछ हो तो निकलो इसी गेट से चलते नहला दो इसे ज़रूरतमंद चीज़ें ले लो अरे कुछ है यहाँ पे भाई ये रूट्स जो है मेरे को दिक्कत कर रही हैं यहाँ जाने में थोड़ा ये विगन वेल्ट पोशन पी लूँ Revelio. हाँ भाई इसके के लिए हम यहाँ आए हमारी हेल्थ ख़त्म करके हैं कोई बात नहीं भाई Confringo. सब भागो यहाँ नाइस वेरी नाइस मूनस्टोन फायर ठीक है Revelio. हाँ यहाँ पे हैं भाई अच्छे खासे रुको लॉन्च एन ऑब्जेक्ट एट एन एम्प्टी at an enemy with repulsion ओके repulsion से ओके हिट अ रेंजर विथ स्टूपिफाई पहले repulsion वाला कर देते हैं Don't wish to be seen, do we? Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind,
Not like I suddenly got it. You put me down! Childish. Your spells glance off of me. अरे उसने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया. Run right here. Not quite. Accio. Wingardium Leviosa. असल में मैं क्या वो ये करना चाह रहा हूँ मैं देखो. अरे इसकी बहन का. Rather unwise coming back this way. Descendo. हाँ हो गया. अब बेटा रेंजर बेटा स्टूपीफाई सॉरी. रेंजर तो अभी आया नहीं है. This will not go well for you. Much too slow. इसको एक्स से मारो. अच्छा रेंजर को स्टूपीफाई कौन सा वाला है? स्टूपीफाई यही तो है. अच्छा पल्सो एक्यो. अच्छा स्टूपीफाई वो प्रोटेगो और स्टूपीफाई ठीक है समझ गया. चलो ये रहा है वो रेंजर. मैं समझ इनको पड़ता को यूज करना. अटैक करोगे मैं तो. अरे ये वाला नहीं छोटा वाला. सब एक ही एक अटैक कर रहे हैं यार. छोटा वाला हाँ हाँ गजब हो गया. तो मैं मार There you are. Rather I've been fighting. चटनी बना दी मैंने. Such arrogance. Easily was that your best? You won't stop me. Crisis! Your acrobatics postpone the inevitable. Correct. Protego. Crisis. Oh, that was really good for me. I won't rest. Ringo. You can't stop us. Expelliarmus. Too slow. गलत टाइम पे गलत. Pitiful. Truly. Escape. Again, I beg you. I've been on this for hours. Ringo. Arresto themselves glass on. Not put me down. भाई मेरे
मेरे वेगन बॉल पोशन खत्म होने वाले हैं लग रहा है। You're weak, human. You call that spell casting? Glacier, you could best the likes of me. Get away! इस पे ग्लेशियर काम नहीं कर रहा है। You're making this too easy. इतने टफ क्यों हो गया यार ये So वाला? much too easy. Potato better. Almost. I think एक ही बचा है ना। You almost had a lucky shot. Nice try. Glacier, good for you. Is that it? Expelliarmus, Confringo. Glacier, the rest of the momentum. Leviosa दूर नहीं करना है। Leviosa, it's don't you try again, I beg. भाई ये तो टफ लग रहा है। Glacier, Confringo, the rest of the momentum. Confringo, Cinder. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Revelio. ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं। अब यहाँ पे जो भी है ना सब आराम से ले लूँ मैं, ठीक है भाई। रिव्यू करो। अब और कुछ तो नहीं दिखता है। Revelio. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैप हमें इस तरफ से जाना है ना, ये डोर खोलना है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी इन्होंने। मेरे को देखो यहाँ तो मैं घूम चुका हूँ ना, तो ये वाला जो है ये और ये एक ही जगह मिलते हैं, राइट? देखो ये वाला तो ये जो डोर दिख रहा है इसको तो डिसइल्यूजन में निकाल दूंगा, लेकिन ये जो है इसका क्या यूज है भाई? चलो आगे पता चलेगा। लेजेंडरी का लोगो है ना यहाँ पे। ओके, आई थिंक हाँ ये रहा। अब जाना है मुझे यहाँ पे। क्या चालू हुआ, क्या चालू? अच्छा लेफ्ट चालू, नहीं लेफ्ट ऊपर जाना है। I don't think I've found all the plans. I'd best keep looking.
आई थिंक मैं बहुत बाद यहाँ नहीं आया, उधर ही जाना है मुझे। ठीक, मेरे को अपनी दिमाग अलग लगाने लग गया हूँ। आजा यहाँ तक तूने संभाल दी तो मैं आ गया क्या? Expelliarmus! Glacius! Losing your stride. A miss! चलो मेरा आन की मैजिक तो बन गया। ओके, लिफ्ट भी है क्या? लिफ्ट का क्या काम है? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Okay, Black River. Revelio. ये क्या भाई? Expelliarmus. अब जाना है ऊपर हमें, समझे? But one more thing. यहाँ पे कुछ है ना? होगा कुछ। अब इतना भी मैं नहीं ढूंढ रहा मैं। चलो आओ। I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. लेवल 2 लॉक लगा है। हेलो मोरा सीखना पड़ेगा इसके लिए मुझे। चलो अब नहीं होगा। हेलो मोरस। We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. चलो हम वापस आ गए ना। From nice Hogwarts Valley। ठीक है भाई। ठीक है भाई। Speak with Amit. Amit. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Amit nahi, Amit yaar. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. ठीक है। Without further ado, adieu. चलो लॉर्ड गॉक यहीं पे है ये। इससे पहले लॉर्ड गॉक से बात करूं, मुझे एक काम करना है। ये बलून फोड़ने हैं क्योंकि मैं ओ कोई डिसमेंट ना हो जाए भाई। ठीक है लॉर्ड गॉक। They're building enormous drills. We found their plans.
Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. अरे Professor Fig की wife. अच्छा. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. नाइस यार, नई नई चीजें पता चल रही हैं। प्रोफेसर फिक की वाइफ मर गई मतलब इसके हिसाब से, पर वो भी बिलीव नहीं करना चाह रहा, शायद नहीं मरी। कुछ कह नहीं सकते जब तक डेड बॉडी ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला जो क्वेस्ट था ये कंप्लीट होता है। क्या नाम था इसका? इन द शैडो, नहीं होगा जो भी नाम था। A dragon debrief. After rescuing a dragon from the Kalpo. Meet Sebastian at the Overlook Mine. ठीक है, अगला जो है हमें सेबेस्टियन से जाके मिलना ओवरलुक माइन का।
अरे अरे ये नहीं, इसको तो बंद करो, अपनी बुरी निकालो। Arrest the momentum. All right, let's go. Oh, रुको, wait. यहाँ पे कुछ है ना? अरे 40 कॉइन है। ओके, बलून्स नहीं दिख रहा यार वो। I know what that means. Merlin trial. ये मर्लिन ट्रायल हर जगह है ना वो। Confringo. कुछ हुआ क्या यहाँ पे? Revelio. यहाँ पे कुछ हुआ है? अच्छा, इन दोनों को ही करना है हमें, है ना? Confringo. अरे जल्दी वो डूब जाता है, ठीक है। दो ही तो हैं यार, और कहाँ हैं? Revelio. Confringo. Lumos. होगा भाई। ठीक है, तो भाई आज के लिए आई थिंक वीडियो में इतना ही। अब हमें जाके मिलना है किससे? सेबेस्टियन से। ठीक है, तो वो नेक्स्ट अपन उसमें देखेंगे। अपने ये वाले ग्लव्स भी मिले थे यार, ये डार्थ वेडर वाले तो बेकार है ना। हो गए देंगे, ठीक है। और क्या मिला है? ये मास्क मिला है, हाँ ये सही है यार। बताना, ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन बेसिकली उसकी वो लेवल कम है। तो यार वन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। यहाँ पर जितने भी आइटम रहेंगे फालतू गियर वाले वो मैं बेच दे रहा हूँ, जितने भी हैं। जैसे कि इसका एक्स्ट्रा वाले आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, सेव गेम।